जो भी रेयर अर्थ है वो इतने नॉर्मल इंडस्ट्री में से ज्यादा स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज में ज्यादा यूज होते हैं। तो जब कोई भी चीज किसी भी स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज में ज्यादा यूज होने लग जाती है, उसकी मेनी इंडस्ट्रीज राइट नाउ कैन नॉट इवन फंक्शन विदाउट देम। सो दैट इज व्हाई दे राइट नाउ जो रेयर अर्थ मटेरियल या मिनरल्स कंट्रोल करेगा, दे ऑलवेज हैव I mean, it has already exploded, but अगर next 2-3 years में जब ये बहुत ज्यादा एक्सप्लोड होने लग जाएंगे रेयर अर्थ, these industries will be कि चाइना पूरी रेयर अर्थ सप्लाई चेन में काफी डोमिनेंट पोजीशन होल्ड करती है। तो क्या आपको लगता है कि 2030 तक चाइना तब भी डोमिनेट करेगी ये पूरी इंडस्ट्री को? चाइना के पास अभी जो एज है, इट इज नॉट ओनली इन द कंट्रोल ऑफ माइनिंग, इट इज इन द कंट्रोल ऑफ दैट। और ये कंट्रीज इफ दे आर नॉट एबल टू रिप्लेस चाइना बाय 2030, दे विल गिव सम कंपटीशन टू चाइना। इंडिया के पास रेयर अर्थ रिजर्व्स तो है ही, साउथ में ज्यादा काफी है एंड दे आर लुकिंग एट इट। तो आपको लग रहा है कि 2030 तक इंडिया कैन बी अ ग्लोबल पावर हाउस या प्लेयर विद इन दिस मार्केट? मेरे हिसाब से इंडिया में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो अभी होगा, स्पेसिफिकली इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री, एज वी ऑल नो, कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ही अब चाइना के अलावा 3 कंट्रीज सबसे बड़े विनर्स बनकर उभर सकते हैं, वो और कौन होंगे? रेयर अर्थ, उनके पास भी रिजर्व्स हैं, उनके पास भी वो कैपेबिलिटीज हैं, एंड थर्ड कंट्री वुड डेफिनेटली बी नमस्ते जतिन जी, वेलकम टू इनर हैबिट्स सर। कैसे आप? ऑल गुड। श्रुति जी, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। फॉर एवरीबडीज नॉलेज, जतिन जी इज ए CMA, चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ही होल्ड्स एन MBA एंड ही इज हाईली क्वालिफाइड। तो आज हमने को इस वजह से बुलाया है क्योंकि हम रेयर अर्थ मेटल्स के बारे में ज्यादातर बात करने वाले हैं। A lot of you guys don't know this, लेकिन मैं अभी गोल्ड और सिल्वर के बारे में बहुत सुन रही हूँ, and there is such a huge important factor we are missing, which is rare earth metals, which will become really critical. तो जतिन जी, रेयर अर्थ एलिमेंट्स आज दुनिया के सबसे स्ट्रेटेजिक रिसोर्स बन चुका है, लेकिन आज कल लोग गोल्ड और सिल्वर की ज्यादा बात करें। हम AI चिप्स में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, रिन्यूएबल एनर्जी और एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स में ये चीजें यूज करते हैं, तो सब इन पे डिपेंड करते हैं। आपके हिसाब से रेयर अर्थ इतने इंपॉर्टेंट अचानक क्यों हो गया है? वेरी गुड क्वेश्चन टू स्टार्ट विद, श्रुति। आई थिंक फर्स्ट ऑफ आई पुट इट दिस वे, ये अचानक इतने इंपॉर्टेंट नहीं बना, ये अचानक इतना इंपॉर्टेंट लोगों को पता चला कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। This has been very important since ages, but since in this particular modern world where we are, I mean, where everything runs on advanced technology and advanced technology needs these special materials. So जो ये special materials होते हैं, these are required in things like EV motors, wind turbines, as you correctly pointed out, defense systems, satellites, radars. और जो भी रेयर अर्थ है वो इतने नॉर्मल इंडस्ट्री में से ज्यादा स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज में ज्यादा यूज होते हैं। तो जब कोई भी चीज किसी भी स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज में ज्यादा यूज होने लग जाती है, उसकी इंपॉर्टेंस अपने आप ही मल्टीफोल्ड हो जाती है। एंड इसको हम रेयर अर्थ मटेरियल्स को, दे आर नॉट वैल्यूएबल बिकॉज दे आर रेयर, they are valuable because they have these special magnetic, electrical, and physical properties as well, which are very hard to replace in this time and age. So many industries right now cannot even function without them. So that is why they moved from just minerals to being strategic resources. और इसको एक सिंपल वे में अगर हम समझना चाहें तो इसका एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव ये भी है कि जैसे अर्लियर ऑयल वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स इन द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड। So now, since we are moving away from petrol and diesel and moving to EV industries, so अगर हम उस हिसाब से सोचे तो अर्लियर इट वाज लाइक जो ऑयल कंट्रोल करेगा शायद वो वर्ल्ड में एक बहुत ज्यादा डोमिनेशन या एक नेगोशिएशन लेके आ सकता है। सिमिलरली राइट नाउ जो रेयर अर्थ मटेरियल या मिनरल्स कंट्रोल करेगा, दे ऑलवेज हैव अ अपर हेज। सो we'll have to look at from that point of view as well. तो अगर हम व्यूअर्स को थोड़े बहुत मेटल्स या मेटल्स पर्टिकुलरली हम बता दें और उसकी इम्पोर्टेंट यूज हम बता सके,
So it would be fantastic. Do you have any in mind? So I think metals में सबसे important metal is the magnet which we use. And magnet जो use होता है, it is only not used in EVs. It is also used in wind turbines, also in the defense systems. क्योंकि डिफेंस में जो भी प्रिसीजन और रेडार सैटेलाइट चाहिए होता है, तो उसमें सब में एक पर्टिकुलर मैग्नेट चाहिए होता है विच इज बीइंग क्रिएटेड फ्रॉम दीज पर्टिकुलर मिनरल्स। तो वो मैग्नेट इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, समटाइम्स वी पीपल इंटरचेंजेबली यूज इट एज रेयर अर्थ मैग्नेट्स। सो इतना इंपॉर्टेंट मटेरियल जो है इसमें से वो एक मैग्नेट भी होता है। जी, और वो ईवी कार्स में भी डालते हैं। आई हियर दैट इट्स सो इम्पोर्टेंट इन दीज ईवी कार्स एंड इट्स बिकम अ नेसेसिटी। It is a necessity. That's what we were talking about. It is a necessity. Without these magnets, these rare earth minerals, I mean, it is so important कि अगर कल को ये rare earth का scarcity हो जाता है या तो it will not directly halt that particular industry, but वो इतना बड़ा jolt होगा कि पूरी industry shaken up हो सकती है। So we can think from that perspective कि today's time and age में imagine your world without electronics, without chat GPT and without EV. So I don't think so. I mean, we still can understand, but somebody who is Gen Z, cannot even think about without having electronics or without having AI or without having any EV, which is the future right now. So that's why they are becoming so important right now. करेक्ट। और आज के टाइम पे मैंने सुना है कि चाइना, मैंने सुना भी नहीं है, मैंने बहुत कुछ रिसर्च किया है इस पे कि चाइना पूरी रेयर अर्थ सप्लाई चेन में काफी डोमिनेंट पोजीशन होल्ड करती है, राइट? द इश्यू रियली केम up when China started reducing and introducing new licenses, which made it so difficult to export rare earth. Now, for viewers, it is 80 to 90% that they control, from mining through to production, which is very heavily dependent on China. The whole world is. तो क्या आपको लगता है कि 2030 तक चाइना तभी डोमिनेट करेगी ये पूरी इंडस्ट्री को, या फिर आर अदर कंट्रीज गोइंग टू बिकम मोर वेल रिकग्नाइज्ड? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी है जो जिसके पास रेयर अर्थ मिनरल्स है और मेटल्स है, और अमेरिका भी शायद उसके पास एक दो माइंस भी है। आपको क्या लग रहा है? Right. So I think most likely China will dominate by 2030 but they maybe not as uncontested as it is today. Right now, they don't have any competition. I mean, as you rightly pointed out, earlier when China put those sanctions on the export of rare earth minerals, everything was shaken up. In fact, in India also, EV industries or the automobile industries has a big halt and government has to step in. In fact, some people pointed out in this way कि Trump even had to pay a visit to China to procure these rare earth materials. So it is this important. You can imagine Mr. Donald Trump visiting China for this thing. So you can imagine the importance of these materials. Having said that, I think China के पास अभी जो edge है, it is not only in the control of mining, it is in the control of that processing, refining, and a big part of the downstream supply chain. सो उसमें ये इतना यूजफुल इसलिए भी है कि ये सिर्फ ग्राउंड से इजीली एक्सट्रैक्ट नहीं हो जाता लाइक गोल्ड और सिल्वर। ये इसलिए इतना स्ट्रैटेजिक मिनरल भी हम कहते हैं बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू एक्सट्रैक्ट इट from the earth, and then we'll have to separate it, process it, and eventually we'll have to, create that finished product, which is a magnet or any other uh, use, which we could say. So दो जो प्रोसेसिंग स्टेज में है उसमें चाइना ने इतना ज्यादा डोमिनेंस कर लिया है अपना, एंड इट हैज नॉट स्टार्टेड वेरी रिसेंटली. It has been going around. So if I'm not sure whether you are aware or viewers are aware of this, but China has started this 30 years back when nobody was even aware of it. तो चाइना ने 30 years पहले ही वो स्ट्रैटेजिक मूव किया कि विल एंटर इनटू दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री बिकॉज दे न्यू कि जब वहां पे अरब और इसराइल का वॉर चल रहा था फॉर ऑयल, दे अंडरस्टूड कि हमारे पास वो ऑयल का स्ट्रैटेजिक एडवांटेज नहीं है. इफ वी हैव टू ग्लोबली डोमिनेट, व्हाट वी कुड डू,
and then they have identified कि ये rare earth minerals का use हो सकता है, because at that point of time electronics was, I mean, booming up, and EV तब आया भी नहीं था, but EV की चर्चा चल रही थी, बात चल रही थी, everybody was paying attention to this EV industry as well, और वो under consideration ही था, तो China took that strategic initiative and put their bet on these minerals. तो जो 30 years में उनको इतना advantage मिला है, it will not be as easy for anybody like US or India to just, I mean, remove them from the spot. But having said that, अब ये क्या होगा? Everybody understood post these sanctions that we'll have to stop our reliance on China, and everybody is trying to become that self-reliant in that way. So if you research or if you see, now US is also paying that attention. In fact, India has put some budget, I mean, somewhere close to 7,000 crores in this particular space. Australia, as you rightly pointed out, I mean, they have a strategic advantage of having those mines, and uh, so in that case, ये सब जो countries हैं, ये भी उभर के आ रही हैं, और ये countries, if they are not able to replace China by 2030, they'll give some competition to China. And to your point, I believe कि Australia और India ने partnership की है, particularly within this space, and India is exploring the south side for mining rare earth metals, and it's not like they don't have those reserves. They do, and these are going to be so critical in the next 5 to 10 years, and India has identified certain opportunities. Now, I guess then we are looking at it from a vulnerability perspective कि कौन सी industries impact feel करेंगी. In my view, I'd say EV, AI, obviously all these chip industries, laptop में chips डालते हैं, वो सब पूरा infrastructure पे ये impact करेगा. If, for example, exports restrict हो जाए फिर से, if China doubles down on that, would you agree? Yeah, totally agree with it. And in fact, I mean, apart from EV and I think renewable energy is also one of the major consumer of this particular magnets or materials. And मुझे लगता है सबसे important और strategic initiative in this case रहेगा defense equipment का. Because defense equipment में जो modern warfare में जो defense equipment चल रहे होते हैं, they need this for precision systems. और अगर supply disrupt हो जाता है, production slow down हो जाता है, you can imagine किसी भी country का अगर defense system पे कुछ भी आता है, तो how badly it will impact that particular country. So we can imagine कि चाइना इस टाइम पे किस लेवल का डोमिनेंस रख रहा है और why. और in fact, I would want to point this out. Earlier, when China started out, they were very happily exporting everything from China. So उन्होंने कैसा ये मॉडल अपनाया, the similar in a very layman language, like how these quick commerce companies start with making you a user. इनफैक्ट उन्होंने इतना आदत डाल दिया कि चाइना से इतना चीप प्रोड्यूस कर दिया. एज यू ऑल नो, आई मीन, चाइना इज द मास्टर ऑफ प्रोड्यूसिंग और मास्टरिंग द आर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. तो उन्होंने इतना चीप प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट करा. यूएस ने अपना एक प्लांट ही बंद कर दिया जिसमें वो प्लांट बना रहे थे, जिसमें से वो रेयर अर्थ मिनरल्स या मेटल्स निकाल रहे थे. तो उन्होंने इतना सबको आदत डाल दी, और उन्होंने स्टार्टिंग में भी अपनी कंट्री में इतना इंसेंटिवाइज किया अपनी इंडस्ट्रीज में, अपने बिजनेसेस को, कि एक्सपोर्ट करो, इसमें एंटर करो. और नाउ दे अंडरस्टूड व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट, और उनको वो स्ट्रैटेजिक एडवांटेज समझ आ गया. नाउ दे आर restricting people to export. सो उस पॉइंट से दे अंडरस्टूड कि, और अभी भी जब भी यूएस और चाइना का वॉरफेयर हुआ था विद ऑल दीज टैरिफ्स, चाइना हैज द बेस्ट एडवांटेज, और उन्होंने वही यूज करा. उन्होंने सबसे पहले ही रेयर अर्थ मेटल्स पे एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई. सो दे ऑल्सो अंडरस्टूड, एंड सिमिलरली उससे वर्ल्ड ऑल्सो अंडरस्टूड कि चाइना के पास क्या एडवांटेज है. सो नाउ एवरीबडी एल्स इज watching closely, and uske hisab se everybody is prepared also, क्योंकि because everybody knew, especially India, US, they knew कि they don't have a very good relationship with China. So अगर कल को चाइना के साथ कुछ भी ऐसा होता है, they don't want to be solely dependent on China for these critical metals.
Right. And I'm going to ask you a different question though, क्योंकि I guess my next question was अगले 5 या 10 साल में कौन rare earth producer बन सकता है, but we already have identified 3 countries that could come up really quickly. So I'm not going to ask you that again. But what I want to know is, अब we are rightly identified कि इंडिया के पास rare earth reserves तो है ही, साउथ में ज्यादा काफी है, and they are looking at it. तो आपको लग रहा है कि 2030 तक इंडिया कैन बी अ ग्लोबल पावर हाउस या प्लेयर विद इन दिस मार्केट? एंड द रीजन आई आस्क इज बिकॉज वी हैव सीन सच ट्रमेंडस प्रोग्रेस फ्रॉम इंडिया. हमने बहुत प्रोग्रेस देखा है, एंड दैट इज इन 14 years. सो आई फील दैट इट्स नॉट इम्पॉसिबल फॉर इंडिया to start, I guess, mining and also having production houses. I mean, the rate India has grown from an infrastructure point. I mean, they are leaders today. They are sitting in a very comfortable position to see this through. What are your thoughts? I think to become a powerhouse by 2030, I mean, will require serious execution. The good part is India has very early identified कि हमें this is very important for them, and especially with all this China case, whatever happened, and India, especially the policymakers, are also paying attention to it. So in the last budget, they have introduced not a small amount, but a 7,000 crore rupees for this particular space, and they are also introducing these rare earth corridors. They are trying to extract these materials down south, as we rightly talked about. So अभी इसमें इंडिया में सबसे बड़ा, इंडिया के लिए बॉटलनेक माइनिंग का ही नहीं रहेगा. मेरे हिसाब से इंडिया में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो अभी होगा, और स्पेसिफिकली इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री, एज वी ऑल नो, कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ही सेपरेशन, रिफाइनिंग, प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग और सब कुछ ये डाउनस्ट्रीम यूजेस का है. तो इंडिया अगर वो मिडल लेयर को मास्टर कर लेता है, then I 100% agree with you. India can become one of the major rare earth powerhouse by 2030, or in fact, 2030 would be a very aggressive target, I would say. I mean, 2 3 years down, more than that. I mean, by 2035, we could see. I mean, if we are very serious on that path, अगर हमें वो funds और वो technology और वो faster implementation अगर हम करते हैं, तो by 2035, I could see a major chunk coming from India in this particular space. But so was putting satellites up in space, Jatinji, and we've done it. Do you know what I mean? Yeah. So that's what I mean. So somebody has to step in and see कि उसका potential क्या है, and अगर जहाँ पे भी जब वो टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स और जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स और गवर्नमेंट का रोल इंट्रोड्यूस हो जाता है, और उसके बाद आई डोंट थिंक सो एनीथिंग इज द लिमिट. सो आई मीन वी हैव proved it to the world, I mean, time and again, what we could do, and this is just another stepping stone, I would say, and I am very bullish on India in that space as well. Now, I'm going to ask you a question. You mentioned defense systems. Defense systems are very critical at the moment. I mean, the whole world is talking about defense systems. They're talking about defense equipment, particularly क्योंकि हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं जहां पे देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ अपहीवल. लोग बोल रहे हैं कि द नेक्स्ट 2 years 3 years could define different types of pockets of wars, even a world war potentially. I mean, we're heading that way. तो डू यू फील कि जो भी ये मिनरल्स को कंट्रोल करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा, यू नो, मैन्युफैक्चर या प्रोसेस करेगा, दे विल आल्सो कंट्रोल द डिफेंस सॉर्ट ऑफ equipment and market, and how much release and invention there is within that space? Absolutely. That's what we talked about earlier. That's why China has this edge. Because you realize जो भी फाइटर जेट्स हैं, मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, इन सब में एक प्रिसिशन गाइडेंस जो हम बात कर रहे थे, उसमें ये क्रिटिकल मिनरल्स ही चाहिए होते हैं, इंक्लूडिंग दिस रेयर अर्थ्स. तो जब जो भी अगर इसको कंट्रोल करेगा, अब सपोजिटली इफ चाइना इज इन वॉर विद यूएस एंड यूएस डज नॉट हैव दीज मटीरियल्स, why would China export it to US? I mean, for them to use against them. So it's as simple as that. Similarly, what Iran just did with this oil, जैसे ही कोई वॉर होता है और उनका कोई एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज होता है, दे वुड ट्राई टू यूज इट टू देयर एडवांटेज. सो अगर जब भी ऐसा कुछ होता है, एंड वर्ल्ड हैज आल्सो रियलाइज्ड इन दैट केस. और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हेन यू पॉइंटेड दिस आउट इज, आई एम नॉट श्योर मेनी ऑफ व्यूअर्स नो, बट ग्रीनलैंड में बहुत रिसेंटली रेयर अर्थ मिनरल्स की माइंस और एक्सट्रैक्ट हमें पता चला था कि वहां पे रेयर अर्थ का रिजर्व्स हैं वहां पे. तो उस केस में क्या हुआ कि नाउ इफ यू सी
Trump suddenly had a very special interest in Greenland. He, I mean, some people talk, I mean, it could be a conspiracy theory or whatever it is, but I mean, there were news, there were reports that Trump is trying to capture Greenland or get Greenland under US by any chance. And one of the major reasons for that is rare earth minerals. So now we can imagine the kind of importance these minerals have. If one country is going to war with other country or trying to capture another country because of one mineral, we all can imagine how important it is. No, very true, very true. And you make a very strong case, because Trump's interest in Greenland is not just because it's an island. It is partly because it is a sort of a hub where they can put their missiles and everything and then secure the US, but they have the reserves of minerals that are required. So you're very right. मैं आपको इन्वेस्टर्स हैट डाल के पूछना चाहती हूँ कि what do you think investors are missing the most at the moment? And the reason I'm asking is क्योंकि मैंने आपको बोला सब चेस कर रहे हैं गोल्ड और सिल्वर, right? And I feel that they are missing something here that could potentially grow in the next 5 years, because the resource is very scarce. So talk to the investors. I mean, where are the opportunities within this space exactly? I think apart from the mining companies, which we all know, because वो तो दिखता है, सबको पता ही चल रहा है कि माइंस ना होगा. I think the most underrated part right now is all these processing and refining companies, also the magnet manufacturing companies. And one of the major, which I also recently discovered, these industries, I mean, who do all this kind of recycling of EV and all this space. So I think when I mean, it has already exploded, but अगर next 2-3 years में जब ये बहुत ज़्यादा explode होने लग जाएंगे rare earth, these industries will become so important that it will become, I mean, it will become impossible to ignore any of these industries. So I think anybody who's trying to invest in this particular space should not only look at the mining companies, they'll also have to look at from complete ecosystem. तो उसमें रेयर अर्थ की जो कंपनीज प्रोसेसिंग कर रही हैं, जो भी रिफाइनिंग कर रही हैं, कोई भी कंपनी जो रिसाइकलिंग कर रही है और जो भी कंपनी सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन में भी काम कर रही है, बिकॉज इसका सप्लाई चेन भी बहुत ही क्रूशल और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, moving that rare earth from one place to another. So anybody who is engaged in that particular space will have to keep a close eye on that as well. Right, and this is not financial advice, guys. हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप लोगों को बता दें कि आप खुद अपना रिसर्च करके सोच के इन्वेस्ट करो, और अगर आपको पता ना चले तो फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कीजिए. हम आई कैन सी दिस, मैं यहाँ पे बैठ के देख सकती हूँ कि फ्यूचर क्या है इस सेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे बहुत पॉलिटिकल वॉर्स होने वाले हैं. एंड आई फील and it's an instinct. So if you believe in instincts, fine. If not, that's fine too. Then don't invest. लेकिन मुझे लग रहा है कि and I will personally be investing in it right now myself, and I feel there is a growth in this, and this is my own journey that I will be taking. That this is just a conversation here. I think Jatin ji would agree as well. Yeah, totally agree. Yes. अच्छा, मैं आपको एक चीज पूछना चाहती हूँ. You've talked about the sectors, you've talked about that. अब इंडिया में ऐसी सिचुएशन है जहां पे लोग एक्चुअली, आई सपोज, बहुत कम कंपनीज है जो अभी रेयर अर्थ मेटल्स में सॉर्ट ऑफ इन्वेस्ट कर रहे या एक्सट्रैक्ट करे या जो भी. लेकिन व्यूअर्स को आप क्या बताना चाहेंगे, बिकॉज दे आर ऑब्वियसली लुकिंग फॉर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इंडिया में. Yeah. So again, I mean, just putting it out there, I mean, it's not an investment advice, but I mean, anybody who is trying to watch list these stocks or, I mean, is eager to learn more about this particular space can definitely look out for companies like GMDC, I mean, which is Gujarat Mineral Development Corporation, I mean, which is directly engaged in rare earth exploration. And somebody like Hindustan Zinc, which is a Vedanta subsidiary, I mean, who is also working in extraction of this space. One another company I can think of right now is Permanent Magnets Limited, I mean, which is engaged in, I mean, end-to-end product manufacturing. So there are companies like these, I mean, 1-2 companies also, which, I mean, will be benefited with exploration or with
bullishness of this particular space would be Nalco. I mean, because that is also somewhere related to this space. So yeah, I mean, we can definitely look out for that. One underrated stock, I would say, or underrated sector, which I have also pointed out, was the EV recycling. So somebody who is interested in that space could look out for Eco Recycling Limited. I mean, that is one of the largest player in that space as well. So these are some of the companies, I mean, which I personally feel, or I will be, I mean, watch listing this for years now to, I mean, how they would perform for this जो भी अभी boom आने वाला है rare earths में, and I'm very bullish कि वो boom आने ही वाला है बस. हाँ नहीं, बात सही कही आपने. एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, हिंदुस्तान जिंक ने अभी लाइसेंस मिला है, नया लाइसेंस मिला है टू do the processing and the mining of rare earth metals. Yes. And that shows that there is so much strength in this market, and that we are sort of heading in the right direction and looking outside of gold and silver as well, which is currently on a very big high. So please, audience, keep it on your watch list. If nothing, it is always handy. अब चाइना के अलावा 3 countries सबसे बड़े winners बनकर उभर सकते हैं, वो और कौन होंगे? I think Australia would be one of them because Australia के पास reserves भी हैं, mining की capability भी है, और as a, I mean, एक credibility भी है as a reliable supplier. So I think if I had to put bet on any 3 countries, those would be Australia and then US, because they understood the strategic. I mean, they are working in that strategic initiatives. They have understood the importance of a rare earth. उनके पास भी reserves हैं, उनके पास भी वो capabilities हैं. And third country would definitely be India because India is high on reserves और India के पास अब strongly government push भी है. वो government policies are working in that direction कि जिससे rare earth minerals की इंडस्ट्री को एक बूम मिलेगी. और इफ जहां पे भी एक गवर्नमेंट का बूम और एक फ्रॉम स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव भी समझ आ जाता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, आई थिंक नोबडी कैन स्टॉप इंडिया टू बी इन अ रेस टू बीइंग टॉप 3 अपार्ट फ्रॉम चाइना. Oh, I totally agree. अब अगर हम 2030 में मिलकर न्यूज़पेपर या फाइनेंशियल हेडलाइन देखेंगे, we know this will be somewhere in there, तो रेयर अर्थ के बारे में वो एक हेडलाइन क्या होगी जो आपको लगता है सबसे ज्यादा लाइकली है? आई थिंक I mean, from my perspective, I definitely feel कि वो headline होनी चाहिए कि China still leads rare earths, but the world has built a backup supply chains. So by 2030, I mean, most of the countries will not be solely reliant on China for this. मुझे लगता है कि और सारी countries जो उभर के आ रही हैं, like India, Australia, US, and many other countries, I'm sure, I mean, would work in that direction. They will create this ecosystem. uh, और उसके बेस पे वो चाइना पे सोलली रिलायंट तो नहीं रहेंगी. हाँ, चाइना ने क्योंकि इतनी पहले उनके पास एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज है और वो मैन्युफैक्चरिंग का एक्सीलेंस का एडवांटेज भी है कि उनके पास वो एज तो रहना ही वाला है. बट हाँ, डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड इंडिया एंड सम अदर कंट्रीज विल emerge as a competitor to China, or at least be self-reliant in that case. What a wonderful podcast, Jatinji. You have been fantastic. I really want to thank you that you have spoken about this. मैंने actually आपकी एक YouTube reel देखी थी. उसमें से I found you, and I've always had a sort of instinct towards which direction I want to follow. Hence, I started investigating this rare earth metal side, and I am investing in it, which is why I wanted to talk to you about it today. So thank you so much, sir. Sure. Pleasure is all mine, Shruti ji. I mean, it's been a wonderful podcast with you. I mean, I thought, I mean, I was the only one talking about rare earths. I mean, when I was researching on rare earth also for my particular video, I mean, I found no particular reference video, I mean, to go to. But when I understood the importance of it, I really wanted people to also understand it. And I'm glad, I mean, through your
our podcast, I mean, more viewers will learn about rare earths and definitely understand the importance of these critical materials. So thank you. Definitely. And I want to say that I'd love to speak to you further in further podcasts where we can share so much more knowledge. I think we both have the same mindset of sharing knowledge. Yeah, pleasure is all mine. I'm looking forward already. Thank you. Thank you.